8 जून 2026 की तारीख। राहुल गांधी ने बंद कमरे में क्या कहा था, मैंने उस दिन भी आपको बताया था सोर्सेज के हवाले से। और जितनी बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी 100% सही निकली। लेकिन आज की तारीख में तो बाकायदा राहुल गांधी ने 9 मिनट की एक फिल्म जारी कर दी और बता दिया कि बंद कमरे में इंडिया गठबंधन के छत्रपों की राहुल गांधी ने कैसे क्लास लगाई थी। बहुत कुछ बोल दिया था, बहुत कुछ समझा दिया था और यह भी बता दिया था कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं ना, या जिस भ्रम में आप जी रहे हैं, यदि आप उसी तरीके के भ्रम में बने रहते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। राहुल गांधी का 9 मिनट का भाषण, मोदी को हटाने का मेगा प्लान क्या था, यह भी राहुल ने उसी बंद कमरे में बता दिया कि अब क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ कांग्रेस और बाकी पार्टियों के बीच क्या अंतर है, इसकी भी पूरी की पूरी लाइन राहुल गांधी ने खींच दी, ड्रॉ कर दी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। आपको राहुल गांधी का 9 मिनट का वो भाषण भी उन्हीं की आवाज में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट तक आपको मैं ये समझाने की कोशिश जरूर करूंगा कि राहुल ने जो कहा है इसके मायने क्या है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी जारी किया है, 9 मिनट का जो भाषण जारी किया है, उसमें मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने बंद कमरे में इंडिया गठबंधन के छत्रपों की क्लास लगाई है। सबसे पहले तो यह समझिए कि राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि डीएमके को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, गोदी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन मैं आज इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यदि जरूरत पड़ेगी आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की, तो फिर डीएमके हमारे साथ है। यह मैं आश्वस्त कर रहा हूं। डीएमके के अलावा उन्होंने पिनराई विजन को लेकर के भी अपनी बात कही और कहा कि अगर यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मुझसे कहेगा कि पिनराई विजन को गले लगाइए, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी उनसे राजनीतिक लड़ाई चल रही है। राहुल यही नहीं रुके, राहुल ने यह भी कहा उसके साथ ही साथ कि देखिए, मुझे आलोचना जो आप लोगों ने करी वो सुनने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गरज नहीं है। मैं सुनने को तैयार हूं, क्योंकि मैं शिव को मानता हूं, भगवान शंकर को मानता हूं, और शिव की तरह मैं हर विष को पी जाऊंगा, क्योंकि मुझे देश बचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल ने कही कि यहां पर समाजवादी पार्टी को लगता है, टीएमसी को लगता है, यहां पर आरजेडी को लगता है कि वो पुराने तरीकों से जैसे वो चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, हैक है, लिहाजा आपको लड़ना पड़ेगा। और राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और आपकी पार्टियों में एक बड़ा अंतर है। क्या है वो अंतर, क्या बताया राहुल ने? राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तब बनी थी जब इस देश का ये ढांचा नहीं था, जब मॉडर्न इंडिया नहीं था, यानी कि ये तब बनी थी जब देश आजाद भी नहीं था। राहुल ने कहा कि 1927 में जब गांधी जी आए इस देश में, तो उससे पहले ये पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी। लेकिन 1927 में जब महात्मा गांधी ने कहा कि हमें आजादी लेनी है,
तो फिर इसने प्रतिरोध करना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी का नेचर है प्रतिरोध, कांग्रेस पार्टी का नेचर है रेजिस्टेंस, कांग्रेस पार्टी विरोध करना जानती है और आज की तारीख में विरोध की ही जरूरत है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि अब चुनाव जीतकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, आपको विरोध करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ज्यादा बेहतर है कि आप सीधे राहुल गांधी की आवाज में 8 जून को राहुल ने क्या क्या कहा था वो सारी बातें खुद सुनिए। भाषण अंग्रेजी में जरूर है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बेहद मायने रखती हैं। मैं कल की तारीख में कोशिश करूंगा इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी आपके पास तक पहुंचाया जाए वॉइस ओवर के जरिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आगे आप राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे। चलते चलते वही अपील कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर क्यूआर कोड आपके दिख रहा है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। I would like to welcome all of you here today. Thank you for coming. Many years ago, I got into an argument with a very good friend of mine. I told him, what you're doing is completely unfair. And his answer to me was, the world is unfair. Get used to it. It is not my place to answer any of the things that were said here today about the Congress Party. It is my place to, like in the Shiva tradition, swallow everything. The idea of the blue-necked one, Shiva, who drinks all the poison. Whatever more you want to say, whatever criticism you have of me or of the Congress Party, we will accept it. And we will accept it happily and with a smile. We will try to make you happy because our role is fundamentally different from yours. I do not say this with arrogance. Our role, as many of you have stated, is to unite all of you together with love and affection. I have been an MP of the Congress Party since 2004, when I fought my first election. Our party is fundamentally differently organized than all other parties in India. And I say this with humility. Why? Because this party began as a resistance movement when modern India did not exist. Unlike all other parties, it was not built using the infrastructure and the protection of the Indian state. The Congress Party is a resistance movement protecting the idea that all Indians are equal. We are fundamentally opposed to the vision of the RSS. We will die in the Congress Party before we stand with or compromise with the BJP or the RSS. You will have to cut off our heads to make it happen. I know lakhs and lakhs of Congress workers in this country who will say, cut off our heads, we will not bow before the RSS. I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy. It controls the intelligence agencies. The BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. The Congress Party is a party of resistance. It does not require the neutrality of the Indian state to operate and survive. In fact, the more the institutions of the Indian state are throttled, the more they are captured, the more aggressively the Congress Party will fight to defend the Constitution of India. All of us share the ideals of the Congress Party. What are those ideals? Satya, Ahimsa, and compassion, Karuna. What is the main issue over here? I have no interest in fighting you. I would have to be a madman to suddenly get up and say, I'm going to fight you. Because you are our allies. You are our friends. You are the people we love. Please understand,
We won the last election in 2024. We did not lose the 2024 election. You asked why Nitish ji left. It was not because of me. It was not because of the Congress party. And I will tell you that in the near future, even those few instruments that used to work will stop working because the BJP and the RSS are tightening their grip on the Indian state. The Congress party faced this very same decision more than 100 years ago. We were a political organization before 1927. The day Gandhiji said, we want independence, we became a resistance movement. If political parties can't function, then what can? Resistance functions. Resistance works. Wherever we resist, it works. I have seen it with my own eyes. I have walked 4,000 kilometers across this country. Resistance works. You don't need political architecture. You don't need the bureaucracy. You don't need the intelligence agencies. You need the act of resistance, meaning I will resist. I will not allow injustice. Full stop. The end. It is a spirit. It is not an organization. It is a way of thinking. And whether we like it or not, that is where we will have to go. The mindset has to change. The mindset must now be we will not fight each other. We will not give the press a chance to attack us. We will resist. You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have a free and fair election to win. And so we have to go into the mode of resistance. Resistance is CBSC. Resistance is NEET. Resistance is going to Greater Nicobar. Resistance is the Bharat Jodo Yatra. You get up in the morning and you say, how can I resist? And you resist. That will work. I guarantee you it will work. And from my perspective, I am more than happy to absorb any criticism from any quarter because for me, this is a religious duty. This is a spiritual duty. This is no longer politics. And that is why I promise you, I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. How to proceed is very simple. We have to get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tajeshwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. And please understand that it takes years and years to build a social media presence. It does not happen organically in a week. I have 10 million YouTube followers, but my account is fully suppressed. So if you're under the impression that social media is fair and that the opposition is being supported by it, you're living in another reality. The entire architecture, media, social media, the legal system, bureaucracy, the intelligence agencies, all of it is aligned to keep this government in power. But this government will not survive. It will not survive because it has destroyed our democracy. It has destroyed the future of the Indian people. What is coming now, after what has happened in Iran, is uncontrollable. It is uncontrollable, and it is going to create a space for us to mobilize the masses. Also, please get rid of the notion that we are not coordinated and do not act together. These are all ideas that the BJP and their friends in the media are putting out. This is not true. I am 100% sure, and I can vouch right now for the DMK. When it comes to defending the idea of India, every single person will be in this room. We have our fights, but if you're asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot and I will not, because I have an ongoing political fight with him. So we have to be flexible and we have to realize that there is a full-scale assault on us, trying to prove that the opposition is weak, is disorganized. Finally,
I find that in our discussions, there is often a tinge of depression. People think, oh my God, how will we ever beat the BJP? Let me tell you, it is easy to beat